Good evening, everyone. Good evening. Minimize చేసి Okay, good evening, my dear students. Good evening to the evening session once again. So, in today's class, we are going for the very important topic over here. Okay, pretty important, my dear students. Okay, once again, is that my voice is audible to all of you? Okay, good evening, my dear students. Good evening to the evening session once again. So, in today. Yes, good evening, everyone. Yes, is my voice is audible to all of you? Okay. Okay, good evening Mohit, good evening Malik, Durga Prasad, Piyush Agarwal. Namaskaram everyone, my dear friends. Good evening. Is that my voice is audible for all of you? Okay, very good. Can we go for the session? Yes. Okay. very good. Okay. So हम लोग ने लास्ट सेशन में हम लोगों ने पूरे जितना भी इंफॉर्मेशन दिया था वो everything that is depending on the completed videos. Okay. So we have been finished, my dear friends. Okay. Every recording, after the completion of every 3 recordings or 2 recordings, we are going for the some mathematical questions and some multiple choice questions also, my dear students. Okay. So last session, okay, we have been finished up to the DSB. Okay, we have been finished up to the DSB, my dear friends. Okay, double sideband modulation up to the yesterday's video. Okay, now till now we have studied about the theoretical multiple choice questions. जितना भी हम लोग multiple choice questions पढ़ा है ना, वो theoretical में पढ़ा है बच्चों. Okay, अभी जो हम लोगों ने जो formulas आप लोग का videos में मैंने record करके भेजा है ना, उसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आता है वो हम लोग इस सेशन में देख लेंगे, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. सो टिल नाउ अप टू द यस्टरडे एवरीवन हैज फिनिश्ड देयर रिकॉर्डिंग्स. एवरीवन हैज फिनिश्ड नाउ, माय डियर स्टूडेंट्स, योर पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग्स ओवर हियर. ओके, वेरी गुड. ओके, so we are going for the today's session, my dear friends, the various sort of numericals. Okay, so today's session I told you very important is the numericals on amplitude modulation. Till now completed concepts. Okay, till now completed concepts, my dear friends. Okay, so what kind of numericals that will be asked, my dear friends, that we are going to discuss in the today's session. Okay, is that clear up to here, everyone? So whenever you are coming to my live class, you need to see all the recordings. You need to watch all the recordings of the till now completed concepts. Okay, and every recording you need to study in a sequence order. Okay, if you miss any one recording also, then what happens, ultimately there will be a more disturbance. My dear friends. Okay, that's the reason in the today's session we are going for the small numericals, my dear friends. Okay, is that clear everyone? Please drop a message over there. Can we proceed the today's session, my dear friends? Can we proceed the today's session, my dear friends? Okay, can we proceed it? Okay, yes everyone over here. In the today's session we are going for the very important numericals, bachcho. Okay, based upon the till now completed formulas over here. Okay, yes, tell me. Yes, we are going for the some more problems also. What is the problem? Then we can
Yes. Okay, we are going to solve the problems on the envelope detector also, my dear friends. Don't worry, Kamlesh. Okay, so what kind of problem you are getting in the envelope detector? We are going to discuss one by one later, my dear friends. Okay. Now, the first question, see the time domain of a AM signal. इन्होंने time domain of a AM signal दिया था बच्चों. S of t is equal to 20 cos, this is 1 plus 0.9 cos of 2 pi into 10 power 4t into cos of 2 pi into 10 power 6 into t. The signal is radiated into the free space using an antenna whose resistance is 5 ohms. Whose resistance is 5 ohms. Later we are going to sketch the spectrum and calculate what, my dear students, the bandwidth, the modulation index, carrier power, total power and efficiency, my dear friends. Okay, so here what I am going to tell you itself is that जो भी नीलिट एग्जाम है ना, नीलिट एग्जाम में क्वेश्चंस so they are going to give only the basic questions, but in this particular problem I am going to explain the every parameter because individual कभी कभी मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी पूछता है, कभी कैरियर पावर पूछता है, कभी टोटल पावर पूछता है, कभी एफिशिएंसी भी पूछता है. That is varying, my dear friends. Okay, but we are going to do only in one problem. How those particular things will be asked, my dear friends, vary over here. So here given what is, my dear friends, he has given that S of t is equal to 20 into 1 plus 0.9, okay, cos of, okay, 2 pi into 10 power 4 into t, my dear friends, into cos of 2 pi into 10 power 6 into t इन्होंने दिया था. Okay, very important, my dear friends. Okay, very good. Then S of t is equal to equation क्या है? This is equal to AC into, my dear friends, this is nothing but what is the value of the here? Here I am going to take it, this is Ka value. AM value क्या है इधर? 1. Okay, so nothing but Ka into AM का मतलब क्या है? Okay, AM value इधर 1 है, which is nothing but mu. Okay, into cos of 2 pi into Fm into t, very good, into cos of 2 pi into Fc into t, my dear friends. Very important, my dear friends. Okay, so here the questions will be asked in a simple manner, but I am going to जो भी है ना आपको एक एक के देता है. ओके, बट पूरे जो इन्फॉर्मेशन एक ही बार इधर मैं करवा रहा हूँ. ओके, सो इधर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इन्होंने दिया था, कितने दिया था ये, दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स. एंड ईयर मैंने बोला था म्यू इक्वल टू फार्मूला क्या है, के ए इंटू ए एम. मैंने आपको पहले ही बोला था के ए वैल्यू क्या है 0.9, ए एम इज नथिंग बट 1. सो ईयर क्या होता है, म्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है 0.9, my dear friends. Okay, Fm 2 pi छोड़ के Fm वैल्यू. ओके, Fm इज इक्वल टू 10 पावर 4 कैसे लिख सकता हूँ मैंने, 10 किलोहर्ट्ज. कैन आई राइट डाउन इन 10 किलोहर्ट्ज, माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 किलोहर्ट्ज. एंड Fc वैल्यू, Fc इक्वल टू 1 megahertz, 1 megahertz, my dear friends. Okay, can I write down like this? See here, AC value, हर एक पैरामीटर, my dear friends, I am writing AC value, mu value, modulation index, FM, that is 2 pi छोड़ के ये है ना FM, ये 10 किलोहर्ट्ज. एंड FC का वैल्यू है 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज, माय डियर फ्रेंड्स. ओके, सो पहले मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया. मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू इक्वल टू एज यूजुअल आर गेटिंग इज 0.9, माय डियर फ्रेंड्स. एंड बैंडविड्थ ऑफ द एम सिग्नल, बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 into FM. Yes, very good. Okay, 2 into FM बोले तो 2 into 10K. So bandwidth is equal to 20 kilohertz. Bandwidth is equal to 20 kilohertz, my dear friends. Okay, very important. Okay, very good. Everyone is following in a very good manner, my dear friends. Okay, pretty important over here. Sometimes I am going to take it. The very important itself is I am hiding the my picture because the space is not enough over here. Okay, very good. Now
Yes. Very good, very good. Now I am going for the what, my dear friends? Carrier power. What is the formula for the carrier power? Carrier power PC is equal to AC square by 2R. इन्होंने रेसिस्टेंस भी दिया था, आर वैल्यू भी दिया था. देखो आर वैल्यू कितना दिया था, आर इक्वल टू 5 ohms. He only given that the R value. Very very important, my dear students. Okay, very good, very good. Okay, AC value दिया था, that is equal to 20 square divided by 2 into 5. So what is the value of the carrier power, my dear friends? You are getting is 40 watts. You are getting how many, dear friends? 40 watts. Okay, and what is the formula for the carrier power? Is this is what, my dear friends, you are getting. Then I am going to do very very important is that to calculate the total power. Total power is equal to PC into 1 plus mu square divided by 2. Okay, PC value कितना है तो बच्चों, already we got it, the PC is 40. See here, this is already mu value दिया था 0.9. Okay, 1 plus mu square divided by 2. Okay, so 40 plus 1 plus mu square 0.9 whole square divided by 2. कितना है तो बच्चों total power? What is the total power? Very good, very good. Okay, what is the total power you are getting? The total power. The total power, how much you are getting, my dear friends? Very very important. Okay, so you are getting the total power is how much? Very good, very good. What is the total power you are getting? The total power is 56.2 watts you are getting. 56.2, my dear friends, you are getting 56.2 watts. And efficiency, you need to calculate the percentage of efficiency, that is equal to mu square divided by 2 plus mu square into 100. Okay, into 100, my dear friends. Okay, which is very very important over here. Then how much you are getting? This mu value already you know that this is nothing but 0.9. Okay, so you can substitute those particular values. You are getting 28.82%. 28.82%. See, in NEET examination, he sometimes he won't ask all these things, but only one parameter. Either he will ask the modulation index, okay, any one parameter. He will ask the modulation index, or he will ask the carrier power, or my dear friends, he is going to ask the total power, or sometimes efficiency. Sometimes he is going to ask, my dear friends, the efficiency also. Very very important, my dear friends. Okay, over here. Okay, pretty important, my dear friends. Okay, everyone is following? Everyone is following, my dear friends? Okay, anyone, everyone? What I am going to explain are very very important, my dear friends. So देखो मैं, if I am going to calculate the spectrum also, two parameters are important. One is the value of FC and one is the value of FM. Okay, FC and FM, my dear friends. Okay, very very important. Here also I am going for the spectrum, because for the spectrum FC is equal to 1 megahertz. 1 megahertz can be written as 1000 kilohertz. 1000 kilohertz. FM is equal to what, my dear friends? 10 kilohertz इन्होंने दिया था. Okay, then I am going for the very very important, the plotting of the spectrum. If I am going to plot the spectrum, my dear friends, very very important. This is the FC value, this is FC plus FM, this is FC minus FM. Just I am showing for one problem. Another one is this is minus FC plus FM minus FC minus FM बच्चों. Okay, like this. Okay, very very important here. This is the spectrum. If I am going to take the spectrum, my dear friends, S of F with respect to the F, this I told you. This, my dear friends, listen carefully. Just I am showing the spectrum, how the spectrum is there. This is EFC, this is EFC plus FM.
This is FC minus FM. What is the value of FC? 1000K. FC plus FM 1010K. FC minus FM 990K. Okay, this is minus FC plus FM minus FC minus FM बच्चों. Okay, very important. Here if I am going for the minus FC is how much it is? Minus 1000 kilohertz. This is minus 990 kilohertz. This is minus 1010 kilohertz बच्चों. Okay, very good over here. We have to see all these particular parameters. But this is what? This is AC by 2. This is AC by 2. This is what, my dear friends? AC mu by. Okay, what is the value here? Very important, my dear friends. Okay, AC mu by. How much, my dear friends? AC mu by 4. AC mu by 4. So AC by 2 means AC is simply AC. What is the value of AC? AC is 20 volts. Mu equal to how much, my dear friends? 0.9. So AC by 2 is how much? This is 20 volts. Here also it is how much, my dear friends? 20 volts. Here it is 4.5. These are 4.5. 4.5, my dear friends. Like that you are getting the different parameters over here. Okay, means here students, what I am saying is that the question, whatever the question that has been asking in the examination, he will ask any one parameter. He won't ask all these particular parameters, my dear friends. Okay, he is asking only the few parameters. Okay, but I have done all these things individually. मैंने आपको पूरा एक ही प्रॉब्लम में आपको दिखाया कैसे क्वेश्चंस पूछेगा बोले तो. Okay, sometimes we cannot predict. Okay, one parameters or two parameters or whatever it may be, my dear friends. Okay, he will ask okay more than one parameter also. That is changing, my dear friends. Okay, वो भी हो जाएगा आदर्श. पहले कम्युनिकेशंस ख़त्म कर दो, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का भी हम लोग जाएंगे. आपका बहुत टाइम है, अब इतना परेशान मत हो जाइए इस टाइम पे. ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन कॉन्सेप्ट इन डिटेल, माय डियर फ्रेंड्स. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वॉट एवर द रिकॉर्डिंग्स आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू, यू फॉलो इन सीक्वेंस वाइज. ओके, मुझे करीबन 20 साल का एक्सपीरियंस ऐसी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस में. व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, माय डियर फ्रेंड्स. ओके, इज दैट क्लियर अप टू हियर, माय डियर फ्रेंड्स? द क्वेश्चन इज दैट क्लियर अप टू हियर? Is that clear up to here, the question, my dear friends? Very important over here. Okay, like this the questions will be, my dear friends. Okay, any one parameter. Okay, इन्होंने पूछा कि इतना बड़ा क्वेश्चन दे के, so इतना क्वेश्चन दे के 4 क्वेश्चन. Okay, he will ask the modulation index. 4 ऑप्शंस देगा आपको. मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है बोल के. ओके, सो वाई से different questions we are going to frame, my dear friends, over here. Okay, very important, my dear friends. Yes, probability है वो हो जाएगा आपको जुलाई में मेरा ख्याल से, मोहित. ओके, yes, it is going on, my dear friends. Don't worry, first let me concentrate on the class. Okay, या दैट्स द रीज़न आई टोल्ड यू. मैंने बोल रहा हूँ आपको, समझ में नहीं आ रहे. कम्युनिकेशन से इलेक्ट्रिकल के पूरे सिलेबस, पूरे जो भी सिलेबस है ना, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल दोनों को है. इट इज़ नॉट फॉर वन सिंगल सेक्शन, माय डियर फ्रेंड्स. साई किरण, इट इज़ देयर फॉर द बोथ द सेक्शंस. ओके, नाउ माय डियर क्वेश्चन, दैट इज सेकंड क्वेश्चन, माय डियर फ्रेंड्स. वी आर गोइंग फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट. इन्होंने इंडिविजुअल कैरियर सिग्नल दिया था, इंडिविजुअली मैसेज सिग्नल दिया था. नाउ टू जनरेट एन AM सिग्नल, कैलकुलेट द बैंडविड्थ एंड टोटल पावर. ओके, कैलकुलेट द बैंडविड्थ एंड टोटल पावर, माय डियर फ्रेंड्स. ओके, इंडिविजुअल दिया था बच्चों.
इंडिविजुअली दिया था. ओके, इधर I want to calculate. Okay, you are getting, my dear students, very very important. C of t is equal nothing but what, my dear students? This is AC. Okay, I already told you C of t is nothing but what? This is AC. This is cos of 2 pi into what, my dear students? EFC. You know very well. 2 pi EFC. ये क्या है? ये AM है. ये 2 pi into छोड़ के 2 pi छोड़ के, my dear students. Okay, EFM. So what is the value? Okay, here what is the value of AC from the carrier signal? AC equal to 5 volts. Okay, and FC is equal to 1 megahertz. Next, AM, listen carefully, AM equal to 4 volts, and FM 2 pi छोड़ के, that is AM cos 2 pi FM. Okay, 2 pi छोड़ के आपको क्या हो जाएगा? FM वैल्यू क्या? What is the value of FM? 4 kilohertz. It is what, my dear friends? 4 kilohertz इन्होंने दिया था. ओके, सो हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बैंडविड्थ आ जाएगा, क्योंकि AM के बैंडविड्थ क्या है? AM के बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ इज इक्वल टू, द फार्मूला इज सिंपल, विच इज नथिंग बट 2 into FM, वो छोड़ दो, सो 8 kilohertz हो गया. 8 kilohertz you are getting, my dear friends. It is okay. Okay, but I want to calculate the total power, बच्चों. Total power I need to calculate, my dear friends. Okay, but to calculate the total power, PT is equal to PC into 1 plus mu square divided by 2. You are getting, this one is equal to 1 plus mu square divided by 2. चलो इधर भी PC का फॉर्मूला क्या है? AC square by 2R. चलो AC का वैल्यू है, ओके, 1 प्लस म्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2. बच्चों हो सके तो यस. सो देखो, AC का वैल्यू है, छोड़ो. R का वैल्यू नहीं दिया तो R का वैल्यू क्या लेना है? वेरी गुड मोहित. R का वैल्यू नहीं दिया तो R का वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितना लेना है? 1 लेना है. बट मॉड्यूलेशन इंडेक्स है क्या इसमें? मॉड्यूलेशन इंडेक्स नहीं है बच्चों. मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज नॉट प्रेजेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, ओवर हियर. We have to calculate first modulation index over here. Okay, and then for that modulation index will be given, that is equal to mu equal to what I am going to tell you is that formula AM by AC. Very good. Modulation index का formula लेना है AM by AC, that is equal to 4 by 5. mu value करना है इधर. Okay, mu value कितना हो रहा है? That is approximately, what is the value of mu getting? 0.8. Then substitute here. PT is equal to AC square, means you are getting 5 square divided by 2 into 1 into 1 plus, okay, 0.8 whole square, okay, divided by 2, my dear friends. Very good, Sai Kiran, Mohit, everyone is doing right. Then you are getting what is the value of the piece, that is total power. Total power as usual, very very important. Maurya, what is the value? It is 16.5 watts. 16.5 watts, my dear friends. Okay, Kamlesh Maurya, I am going to explain your doubt later based upon the envelope detector. Anything. Okay, so what is the value you are getting, my dear friends? 16 point over here. Okay, very good Mohit, very good. Okay, very good over here. Okay, is that clear up to here, everyone? Okay, you are getting these particular here. Now the next question, numerical 3 बच्चों, very very important. The amplitude of a AM signal varies from 2 volts to 10 volts. ये जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये सब का मैंने फार्मूलास आपको रिकॉर्डिंग्स में पढ़ा लिया. every formula, my dear friends, have been explained in your recordings. Okay, every formula determine, एक ही पूछेगा इधर म्यू या PC, PT और साइड बैंड पावर, दैट इज इक्वल टू PSB. बट आपको मैंने पूरे जो पढ़ा रहा हूँ. वेरी गुड. ओके, अब देखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ एम सिग्नल वैरीज फ्रॉम 2 volts to 10 volts वैरीज. ओके, सो क्या है Vmax, क्या है Vmax इन्होंने दिया था, हाउ मच इट इज
10 volts. Okay, and V min equal to how much, my dear friends? It is equal to 2 volts. It is equal to 2 volts, my dear friends. Okay, very very important. He has given this. Now how to calculate? First modulation index mu equal to, formula क्या है? V max minus V min divided by V max plus V min. Then it is how much, my dear friends? 10 minus 2 divided by 10 plus 2. कितना है students? What is the value of mu? You are getting the value of mu is how much, my dear friends? Mu equal to 0.67. Very good. Okay. Very good. Very good. Very good. Okay. Modulation index mu. Okay. That is Mohit. That is amplitude of carrier, Mohit. That is not the modulation index. What is the value of AC? Is equal to, फॉर्मूला ये दूसरा है, V max प्लस V min डिवाइडेड बाई 2. ये 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 6 volts. 6 volts, my dear friends. Okay, very good, very good. Okay, so modulation index is 10 minus 2, that is equal to here 0.6, and you are getting not exactly this one. See the modulation index value, my dear friends. You are getting 0.67 like this. Okay, समझ में आपको सब लोगों का? Okay, now carrier power. If I am going to take the carrier power, PC equal to AC square by 2R, बट इन्होंने AC वैल्यू हम लोग को आया था इधर, PC बाई वैल्यू R वैल्यू नहीं दिया, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या लेना है? 1 लेना है. डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या लेना है बच्चों? 1 लेना है. ओके, सो इधर व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 into 1. ओके, वेरी गुड. दैट यू आर गेटिंग इज 18 watts. 18 watts, my dear friends. ओके, सो हियर बचा है जो साइड बैंड पावर ये वाला और ये टोटल पावर. सो ये मैं आपको इजीली बताऊंगा. ओके, कैसे ये बोल के. इज दैट क्लियर अप टू हियर, माय डियर फ्रेंड्स? व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स. ये सब न्यूमेरिकल्स में एक एक क्वेश्चन पूछेगा नीट एग्जाम में. इतना सब नहीं पूछेगा. ये पूछेगा तो म्यू पूछेगा, या तो एसी पूछेगा, या तो कैरियर पावर पूछेगा, वॉट एवर इट मे बी, वेदर इट विल बी साइड बैंड पावर और वॉट एवर इट मे बी. He will ask in a different parameters over here. Very good. Now I want to calculate the sideband power, my dear friends. How to calculate? So here, what is the value of PC? Okay, the value of the PC is pretty important, my dear friends. Okay, PC is equal to PC. What is the formula? 1 plus mu square divided by 2. Can I write down this thing? I will multiply this PC. This is PC plus PC mu square divided by 2. ये कैरियर पावर होता है, तो ये क्या होता है? ये जो बचा होता है ना, ये साइड बैंड पावर. सो साइड बैंड पावर PSB इज इक्वल टू PC इंटू म्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, माई डियर फ्रेंड्स. ओके, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. नहीं, वो तो कैरियर पावर लकन. ओके, साइड बैंड पावर हाउ मच? वेरी गुड अशोक. ओके, सो हम लोग का कैरियर पावर कितना है था? अभी हम लोग पढ़ा है कैरियर पावर कितना आया था. अभी ये आया था हम लोग का 18 वाट्स आया था ना, ये 18. ओके, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम लोग का आया था 0.67. वेरी गुड. स्क्वायर. ओके, डिवाइडेड बाय 2. देन व्हाट इज दिस वन? 4.04 watts. Okay, 4.04 watts, my dear friends. Now what is the total power? Total power is equal to carrier power. This is carrier power. ये जो है ना, ये side band power. Then it will be PC plus PSB. Therefore the total power equal to how much? The carrier. Okay, carrier कितना है? 18. Okay, जो बचा side band power कितना है? 0. अभी कितना हो रहे? पूरे total power कितना है? The total power is what, my dear friends? How much you are getting? That is a combination of 22.04 watts.
22.04 watts. Very good, Sai Kiran. You are getting these particular parameters over here. Okay, like that, my dear students, different questions. There will be a different questions that will be asked, my dear students, over here. Okay, once again, Joby recordings for new students also, make them to start from the beginning. Every three to four lectures, I am going to explain these particular things only. Okay, say I am not teaching at par at the high level. I am teaching only at par at your NEET examination is concerned. Okay, नीलिट में ये सब इसमें एक पैरामीटर पूछेगा, पूरे पैरामीटर्स नहीं, बट अब तो आई एम गोइंग टू गाइड यू. Okay, because in one problem we are going to do the several things. Okay, like that. Okay, very good, my dear students. Okay, up to here everything is clear. Okay, can I go for the next concept, my dear students? अभी देखो एक क्वेश्चन, थोड़ा a little bit question, my dear students, little bit. This is in the form of antenna currents. वेरी गुड. अब देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन. The antenna current of an AM transmitter is 8 amperes when the carrier is not modulated and 8.5 amperes when the carrier is modulated. Okay, ये antenna currents, my dear friends, determine mu. ये mu कैसे फाइंड आउट करेगा? ओके, जब भी देखो ये करंट एम्पियर्स में दिया था 8.5 एम्पियर्स व्हेन द कैरियर इज मॉड्यूलेटेड. द एंटेना करंट, लिसन केयरफुली, ऑफ एन एम ट्रांसमीटर इज 8 एम्पियर्स व्हेन द कैरियर इज नॉट मॉड्यूलेटेड. कैरियर इज नॉट मॉड्यूलेटेड. ओके, नॉट मॉड्यूलेटेड बेरो तो जो करंट है ना वो कैरियर, दिस इज 8 एम्पियर्स. IC जो मॉड्यूलेट होने के बाद होता है ना वो 8.5 एम्पियर्स में कैरियर इज मॉड्यूलेटेड. ये टोटल करंट है. 8 इक्वल टू 8.5 एम्पियर्स, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, वेरी गुड ओवर हियर. ओके, नाउ हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, लिसन केयरफुली. ओके, नाउ हियर व्हाट आई एम डूइंग इज दैट, इन टर्म्स ऑफ पावर में दिया तो here sometimes you will give the power of an AM transmitter is 8 amperes when the carrier is not modulated. 8 watts sometimes you will give. Okay, when the carrier is not modulated means that becomes PC. Okay, and 8.5 amperes when the carrier is modulated means that becomes PT. watts में दिया तो एक current है my dear students. Okay, so here already he has given, my dear students, in terms of these particular parameters over here. Okay, so here what I am doing is that very important. Listen here, what is the formula for PT? PT equal to PC into 1 plus mu square divided by 2. What is the relation between relation P equal to VI, voltage into current, P equal to V equal to, what is the formula? V equal to IR. So it is nothing but I square R. It is nothing but I square R. Okay, so it becomes what? IT square into R, which is equal to IC square into R into 1 plus mu square divided by 2. Yes, very good cycle. Okay, so here what happens, this R and this R will get cancelled out बच्चों. Okay, इसमें से हम लोग फाइंड आउट करना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड आउट करना है बच्चों. ओके, इसमें से मॉड्यूलेशन इंडेक्स बाहर आना है. ओके, सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर द मॉड्यूलेशन इंडेक्स? मॉड्यूलेशन इंडेक्स बाहर निकाल दिया तो फार्मूला ऐसे होता है. ये बाहर निकाल दिया तो 2 इंटू IT divided by IC होल स्क्वेयर माइनस 1. ये IT है, ये है IC. समझ में आपको?
Yes, this is you are getting the modulation index formula, my dear students, like this. Now substitute, this is a value IT equal to 5 amperes here and IC equal to 8 amperes, my dear friends. Then what is the value of mu you are getting? What is the value of mu you are getting? That is very very important over here. Is that clear what I am going to explain over here? Okay, everyone. Okay, so the pretty important thing is that substitute here IT 5.5 and here IC is 8 amperes. Then resulting is how much you are getting is 0. This is options. 4 options देता एग्जाम पे भी, मैंने डायरेक्ट आंसर लगवा रहा हूँ इधर 0 ऐसे. दिस इज डिपेंडिंग ऑन द एंटीना करंट्स. ओके, व्हेन द कैरियर इज नॉट मॉड्यूलेटेड बोले तो वो वाला IC होता है. जब मॉड्यूलेट हुआ तो कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बोले तो वो वाला IT. पावर में भी ऐसे इच्छे. वेरी गुड. ओके, व्हाट इज दैट मोहित? दैट इज लिटिल बिट, चेक इट. The answer is varying over here for your particular values. Check it, my dear friends. Very very important over here. Okay, similarly, yes, next I am going for the next problem. Now listen, now we are going for the multi-tone modulation. अभी सिंगल टोन मॉड्यूलेशन खत्म हो गया बच्चों, हम लोग गोइंग फॉर द multi-tone modulation. I am going for the multi-tone modulation. Okay, in that he has given the carrier signal. This is a carrier signal, is AC, here FC value दिया था. He is modulated by a message signal having 3 frequencies, 5 kilohertz, okay, 10 kilohertz and 20 kilohertz. The corresponding modulation index are 0.4, 0.5, 0.6. Calculate bandwidth, carrier power, total power, efficiency. yes, इसमें एक पूछेगा. ओके, एफिशिएंसी बच्चों. ओके, बट हियर व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट AC वैल्यू इन्होंने दिया था AC इक्वल टू 20 volts. नेक्स्ट FC इक्वल टू 1 megahertz is modulated by message signal having 3 frequencies. FM1 equal to 5K, FM2 equal to 10K, FM3 equal to 20K, and corresponding modulation indexes दिया था mu1. okay, corresponding modulation indexes mu1 0.4, mu2 0.5, mu3 0.6, ये वाला दिया था. yes, okay, so here multi-tone modulation में, so I am giving the 3 frequencies, means the bandwidth is equal to 2 into highest message frequency, 2 into highest message frequency, my dear friends. Okay, which is very very important over here. Okay, so first of all let me calculate the bandwidth. Here bandwidth is equal to 2 into FM3, then it is nothing but 40 kilohertz, nothing but the 40 kilohertz. 2 into FM3, 4 frequencies there, so 2 into FM4. So here that is the points, my dear friends. Okay, next I want to calculate the carrier power बच्चों. Okay, carrier power, the formula for the, what is the formula for the carrier power? Carrier power is equal to AC square by 2R. R नहीं दिया तो by default 1 लेना है. That is equal to 20 square divided by, okay, 2 into 1 बच्चों. Students, then it will be, what happens my dear students, what is the value you are getting here? That is equal to 200 watts. Okay, 200 watts my dear students. Okay, you are getting this carrier power. But my dear students, ये multi-tone modulation है. Multi-tone modulation में नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? एक टोटल पावर फाइंड आउट करना है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है. मल्टीटोन मॉड्यूलेशन रिकॉर्डिंग्स देख लिया तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर द टोटल पावर? द टोटल पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस म्यू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बच्चों. 1 प्लस म्यू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ओके,
So here what I'm going to tell you, my dear students, is I want to calculate the total modulation index. I want to calculate what, my dear students? The total modulation index here. The total modulation index mu t square equal to mu 1 square plus mu 2 square plus mu 3 square, my dear students. Okay, very good, very good. Okay, so here what ultimately I am going to tell you, I am here mu 1 0.5, mu 2 0. mu 3. सो आप लोग का ये कैलकुलेट करा तो म्यू टी स्क्वेयर आपको क्या हो जाएगा 0 पॉइंट. वेरी गुड. ओके, सो दैट इज नॉट ओके. let me check the answers, Mohit. Okay, this is what, how much you are getting. This is approximately you are getting is how much mu t square is 0.77 आएगा बच्चों. okay, इधर सब्स्टिट्यूट करो. पीसी का वैल्यू कितना है? पीसी इक्वल टू 200 इंटू 1 प्लस म्यू टी स्क्वेयर बोले तो 0.77. डोंट स्क्वेयर इट, डिवाइडेड बाय 2. ओके, 0.87 Sai Kiran. Let me check once again. Mu t square, not mu. We need to get in, do it one mu square because we are going to write down directly mu t square value. Mu t square. Once check, don't worry. These are all the right answers only, my dear friends. Let me check at your home with your calcis. Okay, with your home and do it with your calcis, my dear friends. You don't have any problem over here. Okay, so here 200 लगा दिया. mu t square value ये वाला लगा दिया मैंने. So this how much you are getting? This is 277 watts आ रहे. चेक करो एक बार. 277. लखन मीना चेक mu t ले लो. mu t square वाई आप क्यों मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेके आ रहे? mu t स्क्वायर जैसे लगा दो. mu 1 स्क्वायर प्लस mu t स्क्वायर mu 3 स्क्वायर ये पूरे ऐड करो तो 0.7, क्योंकि हम लोग mu t स्क्वायर वैल्यू 0.77. डोंट अगेन पुट द स्क्वायर. Okay, everyone, my dear students, don't put again there. Is that clear what I am? Yes, very good, Sai Kiran. This is 277 watts. Okay, 277 is the right answer. Now I want to calculate the efficiency in case of multitone modulation. I want to calculate the percentage of efficiency in terms of the multitone modulation. So मैंने आपको recordings में जाओ. mu t square divided by 2 plus mu t square into 100. ये देखो अभी that is equal to 0.77. I am waiting here for your answer. Plus 2 plus 0.77 into 100. ये कितना है देखो. Yes, very good, very good. अभी efficiency कितना आया? At least tell me the efficiency if you have calcis. Very good, Sai Kiran, very good. This is आपको आ जाएगा very very important 27.79%. 27.79. Like this, my dear students, different. They no need of asking all the questions, but he will ask only few points. बट जितना भी हम लोग फार्मूलाज देखा ना उसका ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे होता है बोल के ये सब एग्जाम्पल्स है. ओके, इफ़ यू आर वेल वर्स्ड with respect to your subject fundamentals, second one is concept, third one is the formulas remembrance, very very important, then only you can able to achieve crack every mark, my dear friends. Okay, once again I am reminding all the important things, my dear friends. I am covering all the basics, okay, so that you cannot miss any mark in your examination. Very very important, my dear friends. Okay, is that clear? Can I go for the next problem over here? Can I go for the next problem, my dear friends, over here? Okay, next. Calculate the percentage of efficiency of a sinusoidal AM wave modulated to a depth of 100%. Modulated, ये क्या है? Efficiency, my dear friends. Okay, modulated to, very good Mohit. Okay, modulated to a depth of 100%. Modulated depth of 100% बोले तो म्यू वैल्यू कितना है? 100 by 101.
ओके म्यू वैल्यू 1 ये क्या है साइनसाइडल एम वेव साइनसाइडल एम वेव में परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी के मैंने फार्मूला बता दिया म्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 प्लस म्यू स्क्वेयर इंटू 100 दिस इज व्हाट modulated to a depth of 100% बोलते म्यू वैल्यू इक्वल टू 1 then it equal to 1 by 3 into 100 approximately 33.3 you can 33.3 approximately you are going for those particular percentages my dear friends over here very good similarly यह सब लोग आपको मालूम है ऐसे क्वेश्चंस भी पूछेगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन calculate the percentage of efficiency of a triangular AM wave modulated to a depth of 100%. ये भी इधर म्यू वैल्यू क्या दिया था 1 100% बोले तो 1 या दिस इज कमलेश the numericals will be simple only but I am covering all the formulas anyone calculations कितना ज़्यादा वैल्यूज आपको नहीं देता है वैसे देता है आपको 25 बोले तो 25 into 4 वैसे आपको एग्जाम में वैसे ही हो जाएगा बट टू कैलकुलेट एवरी पैरामीटर जस्ट आई एम रिमाइंडिंग यू ओके मौर्या सो इट विल बी गुड फॉर यू ओनली ओके इट टेक्स समटाइम्स इट टेक्स बिकॉज न्यूमेरिकल्स भी सब आजकल बहुत दे रहे ओके लाइक दैट वेरी गुड सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर द ट्रायंगुलर वेव परसेंटेज एफिशिएंसी विच इज इक्वल टू वेरी गुड म्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3 प्लस म्यू स्क्वेयर इंटू 100 very good very good very good very good 1 by 4 into 100 so approximately how much it is 25% 25% very good like that the different questions my dear friends okay that will be covered over here next can I go for the next question my dear friends okay but इधर म्यू स्क्वायर by 3 plus म्यू स्क्वायर ट्रायंगुलर वेव का ट्रायंगुलर एम वेव का फॉर्मूला नेक्स्ट रेक्टेंगुलर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए रेक्टेंगुलर एम वेव मॉड्यूलेटेड टू ए डेप्थ ऑफ 100% म्यू इक्वल टू 1 इधर भी इस बार रेक्टेंगुलर पूछ रहा था बच्चों रेक्टेंगुलर बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट इज म्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वेयर इंटू 100 ये कितना आया था ये वैल्यू कितना है रेक्टेंगुलर वेरी गुड साइकुरन इट विल बी 50% इट विल बी 50% बच्चों it will be 50% my dear friends very good everyone it will be 50% like that okay इस बार मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यही एनवलप डिटेक्टर में कॉन्सेप्ट आपको वीडियो देखा था ना सब लोग एनवलप डिटेक्टर का कॉन्सेप्ट देखा था ना इसका ऊपर वो बाद में ये जो है ना इसका पहले बाद एनवलप डिटेक्टर ओके इसके बाद ओके देखेंगे न्यूमेरिकल का ये देख लीजिए ओके वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स यस वेरी गुड कैलकुलेटर देखो परसेंटेज ऑफ द कैरियर पावर इन्होंने पीसी पूछ रहा था परसेंटेजेस नेक्स्ट वन इज साइड बैंड पावर पीएसबी of a sinusoidal EM wave for different values of modulation index एक बार modulation index one time he is asking mu equal to my dear friends one time he is asking for the value of 1 another is 1 by 2 next one is 1 by root 2 different values say different values my dear friends he is asking the carrier power and sideband power my dear friends only he has given this modulation index how to calculate the कैरियर पावर एंड साइड बैंड पावर इन्हें एक ही मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया था बट इसका ऊपर से कैरियर पावर साइड बैंड पावर कैलकुलेट करना है ओके मैंने आपको एक बात बताऊंगा आपको परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू एएम वेव साइनसाइडल एएम वेव दिस इज साइनसाइडल एएम वेव म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2 plus mu square into 100. So when you are doing this thing, my dear friends, you are getting approximately for mu equal to 1 I am doing first. Later we can see this. First I am doing for the mu equal to 1. Mu equal to 1 को मैं देख रहा हूँ. I am going to do it for the mu equal to 1. Then you are getting is this is 33% approximately. 33.3 means I am taking 33%. I am taking it is a 33%. But percentage of efficiency का पहले मैंने आपको एक और बता दिया. Percentage of efficiency equal to mu square by 2 plus mu square, which is nothing but PSB by, आप भूल गए, PSB by PT. Okay. As I already told you that the percentage of efficiency is equal to, you are getting this efficiency mu square by 2 plus mu square. When you are getting this equation. ये जो equation आपको कैसे आ रहे हैं, PSB by PT करे तो, PSB by PT करे तो, ओके आपको कितना है तो पहले ये वाला मैं बता रहा हूँ mu equal to 1 को, इसके बाद देख लेंगे ये वाला, ओके. सो इधर then what I am going to tell you, PSB is equal to sideband power 33% of the total power. PSB is equal to this side, this comes here, 33% of the total power. Okay, but total power का formula क्या है? Total power is equal to power of the carrier plus power of the sideband. ये sideband 33% हो सके तो carrier power कितना आता है? total power बोले तो 100%. Carrier power कितना होता है? What is the value of the carrier power, my dear friends? What is the value of the carrier power? What is the, see, total power बोले तो 100% में sideband power 33% of the total power बोला था. जो बचा हुआ होता है ना वो वाला क्या होता है? Carrier power. वो कितना है? वो कितना परसेंटेज है? वो कितना परसेंटेज है बच्चों? How much it is? How much it is, my dear friends? Yes, very good. You can take it. Okay, 33% में बोला था. अभी जो कैरियर पावर क्या बोले तो साइड बैंड पावर. सो कैरियर पावर कितना है? कैरियर पावर इज इक्वल, आई विल टेक इट एज 67% अप्रोक्सीमेटली. Yes, very good. Combination 67. This is for what I have done. This is for the mu equal to 1 बच्चों. This is equal to mu equal to 1. Mu equal to 1. So I am going to make a tabular form here. Okay, I am taking a tabular form, my dear friends, like that the for 3 different values. ये आपको आता है ऐसे. ए म्यू वैल्यू है ए साइड बैंड पावर कैरियर पावर for mu when mu equal to 1. Okay, this is different values of modulation index 1 mu. This is the what, my dear friends, I am taking the very important is the carrier power in percentages. This is the sideband power. When mu equal to 1, the carrier power is what, my dear friends? 67%. This is sideband power is 33%. When mu equal to 1 by 2, I am going to take it, my dear friends. This is 89%. This becomes 11%. When mu equal to 1 by root 2, you are getting this is 80% and 20% bacho. Like that you are getting, my dear friends. So in AM, what happens, my dear friends? In AM, so the conclusion is that so much more power is wasting in the form of the carrier. Much more power is wasting in the form of carrier. So what happens automatically? The efficiency of AM is less. The efficiency of the AM is less, my dear friends, because much more power is wasting in the form of the carrier. So in order to increase the efficiency, I am going to suppress this carrier in DSB. इसके वजह से मैं DSB को जा रहा हूँ. डबल साइड बैंड कैरियर, डबल साइड बैंड मॉड्यूलेशन. डबल साइड बैंड मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा है? मैं कैरियर को हटा रहा हूँ. मैं साइड बैंड से मैं इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ.
So in AM the problem is that the much more care, because here 67%, 33%, 89%, 11%. So much more power is wasting over here. That's the reason I am eliminating this particular carrier in DSB modulation, my dear friends. Very, very important over here. Okay. To explain the concept, I have taken this particular problem also. Very good, very good, very good, Mohit, everyone. Okay. Is that clear up to here, everyone? Is that clear, my dear students, up to here, everyone? Okay. Is that clear? Yes. Can I go for the next concept? Can I go for the next problem? Yes. अब देखो बच्चों, ये है थोड़ा लिटिल बिट आपका एनवलप डिटेक्टर पूछा था ना एक बार, ये कमलेश ने पूछा था। ओके, ये इधर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एन एएम सिग्नल इज डिटेक्टेड यूजिंग द एनवलप डिटेक्टर. Using the envelope detector, my dear friends, the carrier frequency and the modulating signal frequency दिया था 1 megahertz and 2 kilohertz respectively. Okay, an appropriate value for the time constant of the envelope detector क्या है? टाइम कांस्टेंट इन्होंने 4 ऑप्शन दिया था, एक ऑप्शन में आंसर दिया था 0.2 टाइम कांस्टेंट माइक्रो सेकेंड्स, एक ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दिया था 1 माइक्रो सेकेंड, तीसरा ऑप्शन दिया था बच्चों 20 माइक्रो सेकेंड्स, फोर्थ ऑप्शन इज गिवन इज 500 माइक्रो सेकेंड्स. ऐसे चार दिया था. ओके, इसमें ऑप्शंस इन्होंने दिया था कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी, ये वाला कैरियर फ्रीक्वेंसी कितना दिया था 1 मेगाहर्ट्ज. और नेक्स्ट वन इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी एफएम, मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज. इन्होंने टाइम कांस्टेंट पूछ रहा था टाउ. टाउ इज नथिंग बट व्हाट आरसी. टाइम कांस्टेंट इज व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स? आरसी. ओके, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी? टाइम. द रेसिप्रोकल ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी इज व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स? दिस इज टाइम. सो आई एम गोइंग टू यूज सर्टन, मैंने आपको वीडियोस में एनवलप डिटेक्टर के बारे में जब बताया तो मैंने आपको पूरे फार्मूलाज दिया था. उसमें हम लोग वैसे एक फार्मूला यूज करना है. वो कैसे फार्मूला बोले तो 1/AFC इज लेस देन और इक्वल टू RL इंटू C इज लेस देन और इक्वल टू 1/FM. ये वाला फार्मूला यूज करना है बच्चों. ओके, 1/here RL into C is nothing but, this is nothing but the time constant. This is what the time constant tau. The reciprocal of frequency is what I am timing. Time in frequency carrier, time of the message. Is that clear here? What I am telling you? Okay. Yes. 20. Yes. Very good. So 1/FC. 1/FC देखो इसका फ्रीक्वेंसी में दिया था, टाइम होता है. सो ये हो जाएगा 1/FC का मतलब क्या है? 1 ये हो जाएगा, इसमें डाले तो ये 1 बाई फ्रीक्वेंसी टाइम 1 माइक्रो सेकेंड इज लेस देन और इक्वल टू, इसको मैं टाउ लिखता हूँ. टाउ इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 इज 0.5 मिली सेकेंड्स. ओके, 0.5 मिली सेकेंड्स माय डियर स्टूडेंट्स. यू आर गोइंग टू गेट लाइक दिस ओवर हियर. यस, वेरी गुड. ओके, सो very very important my dear students. Here what I am going to tell you. So here 1 microsecond, a tau less than or equal to, ये मिली सेकेंड्स को भी माइक्रो से, बिकॉज किलो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये किलो हो जाएगा मिली हो जाएगा. ओके, ये माइक्रो में कन्वर्ट करो 500 माइक्रो सेकेंड्स, क्योंकि पूरे आंसर से ना माइक्रो में है, माइक्रो सेकेंड्स. ओके, यस, वेरी गुड. चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग द कंडीशन मौर्या. Very good, very good, very good. Okay, then automatically what happens my dear friends? देखो ये देखो 1 microseconds बोले तो the answer should be in between 1 microsecond and 500 microseconds, but it should not be 500. आप कंफ्यूज हो के ये डोलना मत. ये मैंने less than or equal to मत डाला इधर. I am not telling you about the less than or equal to. Here I told you my dear friends, only
ओनली व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स, इन बिटवीन द वैल्यू 1 माइक्रोसेकंड और 500 माइक्रोसेकंड्स का जो बीच में होता है ना वो वाला. वेरी गुड साई किरण. देन इट विल बी 20 microseconds. Don't get confused, don't take this one. Every answer is attracting to you. Every answer is attracting to you, but my dear students, the every answer is the not the right answer over here. Okay, not the right answer, my dear students. Very very important, you have to know over here. You have to know, my dear students, every answer over here. Clear everyone? Okay, this is the numerical 10, my dear students. Okay, numerical 10. अब और दो न्यूमेरिकल पढ़ाता हूँ बच्चों. अब हर एक रिकॉर्डिंग, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक रिकॉर्डिंग, जितना भी रिकॉर्डिंग्स होता है ना, पूरा जो रिकॉर्डिंग्स आप लोग का देखना पड़ता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. In the next recording, my dear students, I am going to explain about the DSB generation methods and demodulation methods. Okay, DSB generation methods. Okay, one is the what, my dear students, balancer modulator and ring modulator. Demodulation, इसके बाद SSB जाएंगे, उसके बाद VSB हो जाएगा, उसके बाद frequency modulation. Everywhere we are going to study the each and every concept, my dear students, in a very detailed manner. Don't get confused at every point of time, but you have to keep your continuous efforts. आपको efforts आप लगाना है, जितना भी है ना, हर एक रिकॉर्डिंग के ऊपर अब जाना है. मैं और एक रिकॉर्डिंग में मैं थोड़ा वो जो भी है ना, मैं नीट से पढ़ाया हूँ, एकदम साफ. जो इम्पोर्टेंट है उतना ही इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ. जो गेट का ऊपर से वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर इतना इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे रहा हूँ. ओके, नीट एग्जामिनेशन में जितना चाहिए ना उतना ही इन्फॉर्मेशन. ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, माय डियर स्टूडेंट्स? कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम? वो डीएसबी का ऊपर everyone is watching the complete videos, or can we go for the next the live session? We are going to finish here in this particular session, my dear friends. Okay, next, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो, अभी हम लोग आया था डीएसबी में. ओके, वी हैव एंटर्ड इनटू द डीएसबी सिग्नल. एक कैरियर सिग्नल दिया था, इज मॉड्यूलेटेड बाय मैसेज सिग्नल टू जनरेट, नॉट इफ जनरेट, नॉट टू जनरेट ए डीएसबी सिग्नल. वो हो गया एएम. हम लोग गया था डीएसबी मॉड्यूलेशन. स्केच द स्पेक्ट्रम. ओके, और कैलकुलेट द बैंडविड्थ एंड टोटल पावर. कैलकुलेट द बैंडविड्थ एंड टोटल पावर. स्पेक्ट्रम भी कैलकुलेट करना इजी है. कैरियर सिग्नल इन्होंने दिया था, एसी वैल्यू, एसी कैरियर सिग्नल में एम्पलीट्यूड कितना है, 20 वोल्ट्स. ओके, एंड एफसी वैल्यू एज यूजुअल, व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स, 1 इज इक्वल टू 1 मेगा हेड्स. ओके, एंड थर्ड वन इज एएम. एएम इक्वल टू 5 वोल्ट्स एंड एफएम इक्वल टू हाउ मच, 4 किलो हेड्स. 4 किलो हेड्स, माय डियर स्टूडेंट. ये डीएसबी मॉड्यूलेशन है, बट डीएसबी में मैंने बोला था डीएसबी और एएम का फ़र्क क्या है. एस मोहित कुमार को गलत है. ओके, डीएसबी और एएम में फ़र्क क्या है, दोनों में बैंडविड्थ सेम है, बट पावर ऑफ द डीएसबी इज वेरी लेस व्हेन कंपेयर्ड टू द एएम. व्हेन कंपेयर्ड टू द एएम, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हियर आल्सो बैंडविड्थ इज सेम एज एएम. बैंडविड्थ इज इक्वल टू एफएम, which is equal to how much, my dear students? This is nothing but 8 kilohertz. Okay, total power. What is the formula for the total power? The total power here, it is changed. The formula for the total power is changed here. Okay, AC square AM square, very good, divided by 4R. AC square AM square, इधर total formula change होएगा. Okay, very very important, my dear students. Okay, this is equal to 20 square into AM square, which is equal to 5 volts. That is nothing but 5 square divided by 4 into 1. Resistance by default नहीं दिया था, एक लेना है. Okay, then it will be how much? It is 2500 watts.
2500 watts, my dear students. Very good. 2500 watts. Here the formula is different because इधर DSB में क्या बोला था, KA equal to 1, KA normalization, KA equal to 1 in DSB. Go for the recordings. 2500 Sai Kiran, not 2000. Okay, AC square AM square by 4R. Okay, very very important, my dear students. Okay, similarly आपको FC वैल्यू और FM वैल्यू भी दिया था ना, FC और FM. Okay, very very important here. FC कितना दिया था, 1 मेगाहर्ट्ज. FM वैल्यू 4 किलोहर्ट्ज. FC कैन बी रिटन एज 1000 किलोहर्ट्ज, 1000 के. इसमें कैरियर नहीं होता है बच्चों, केवल साइड बैंड ही होता है. ये जस्ट स्पेक्ट्रम में डिपिक्ट कर रहा हूँ. This is what? This is EFC plus FM. This is what? EFC minus FM. This is minus FC plus FM. This is minus FC minus FM. अब सब्स्टिट्यूट करो, ये क्या है, ए सी ए एम बाई 4. ये एम्पलीट्यूड सेम है, ए सी ए एम बाई 4. ए वाला आपको ए सी ए एम बाई 4, ए वाला आपको ए सी ए एम बाई 4 बच्चों. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ओके, सब सब्स्टिट्यूट करो, एफ सी वैल्यू और एफ एम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बच्चों. यू आर गोइंग टू गेट हियर. दिस इज व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर गेटिंग इज हाउ मच इट इज, 1004K. This is 996K. This is minus 996K. This is minus 1004K बच्चों. AC का वैल्यू कितना है, AC AM, AC 20, AM 5. This is 4 5 times. So amplitude AC AM by 4 is 25, I think. Like that. Okay, how I am using this particular things also, my dear friends, very very important over here. Okay, is that clear? We are going for the last problem, my dear friends, in this particular session. In the next session I am going to explain some more important problems over here. Okay, some theoretical concepts, then followed by the problems, my dear friends. Okay, this is a DSB, single tone modulation में. Okay, DSB में बच्चों, how we are getting these particular parameters like this. Okay, similarly, now this question is a carrier signal C of t is equal to 20 cos 2 pi into 10 power 6 into t is modulated by message signal. इस बार message signal multitone modulation है. कैसे दिया था, a m of t is equal to am1 cos of, this is 2 pi fm1. This is again, my dear friends, is that am2 cos of 2 pi into fm2 into t. To generate a multitone modulation, calculate the bandwidth and total power. Here also, he was given certain parameters. AC equal to 20 volts, FC equal to 1 megahertz. Okay, and AM1 इसमें से ये वाला 5 volts, FM1 ये वाला, ये 2 pi छोड़ो 4 kilohertz, ये AM2 ये वाला इधर 2 volts, FM2 which is equal to 2 pi छोड़ के 10 kilohertz. 10 kilohertz, my dear friends. Okay, first calculate the bandwidth. Message में multitone modulation में bandwidth is equal to 2 into highest frequency. क्या है, FM1 FM2 में highest क्या है, 2 into FM2. So bandwidth is equal to 20 kilohertz.
20 kilohertz, my dear friends. Okay, you are going to get like this. Okay, but here the formula for the total power is changed. Total power formula is equal to PC. Here whatever the formula I am going to get itself is very very important. Okay, AC square by 4R into AM1 square plus AM2 square. This is like that you are getting, my dear friends. Okay, this is multitone modulation. AC square by 4R into AM1 square plus AM2 square. Substitute the value of AC, AM1 and AM2. Okay, by R value नहीं दिया तो 1 लेना है बच्चों directly. Then you are getting approximately 2.9 kilowatts. जय से बच्चों, very very important, my dear friends. Okay, this is the last. Okay, yes, very good, very good, very good, my dear friends, which is very very important, my dear friends. Okay, so you need to know all those particular things. So next Sunday पे हम लोग बेहतरीन सेशन जाएंगे. ये सेशन एक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन DSB. ओके, फ्रीक्वेंसी फेज डिस्क्रिमिनेशन बारे में. उसके बाद जाएंगे SSB को. उसके बाद जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस टुडेज पर्टिकुलर सेशन, my dear friends, which is very very important. Okay, hope that you have been enjoyed the today's session, my dear friends, in a very beautiful manner. We are expecting some more, okay, concepts in the video lectures, but don't miss the videos lectures, my dear friends. Unnecessarily, if you miss any sort of video lecture, the next lecture will not be understand, because the continuation of the previous concept, every concept is linked with the previous concept also, which is pretty important, my dear friends. Okay, hope that you have enjoyed. We will meet next Sunday at the same timings, my dear friends. Okay, thank you once again. Thank you to everyone. Any queries? Any queries? Any queries? Can I close the session? Okay. I am closing the session, my dear friends. We have been finished. Everyone, good night to all. Have a good day.